Good evening, everyone. Humble request to keep our mobile silent for a few moments, maybe a few minutes from now. Good evening, everyone. It's indeed a pleasure, privilege, honor, and delight to have a delegation from UNFPA. We have with us Mr. Jaydeep Biswas, who is Chief of Policy, Advocacy, and Partnerships, UNFPA India. We have with us Mr. Sanjay Kumarji, and we also have with us Madam Kirti, who looks after UNFPA in Bihar. Let me have the privilege of introducing Mr. Jaydeep Biswas, also known as Jay. He's the Chief of Policy, Advocacy, and Partnership at UNFPA India, which includes leading the policy work, population dynamics and research, communications and media, innovation and technology, and strategic partnerships. Previously, he was Senior Governance Advisor and Acting Team Leader, DFID India Global Program for the FCDO and DFID India. As Governance Advisor in UK DFID, he led program and policy work in multiple sectors: health and nutrition, urban development, governance and institutions, public financial management and anti-corruption, civil service reforms, and civil society. And countries including India, Nepal, Ethiopia, Bangladesh, Sierra Leone, Myanmar, and United Kingdom. Jay has a master's in governance and development from IDS, University of Sussex, UK. He is a British Chevening scholar. He speaks English, Hindi, Bengali, and moderate Odia and Nepali. His other interests include music, cricket, traveling, poetry, physics, and history. With these words, may I please request all of you to welcome him with a big round of applause. May I please request Madam Kirti to give some opening remarks and welcome. Over to you, in brief. Thank you, Dr. Rana. Thank you, Dr. Rana. My name is Kirti, and I'm the State Head of Bihar UNFPA. It's really a great honor to be here with you. All of you may not be see that you are very dynamic, and therefore it's a great pleasure to be among people who are innovative, dynamic, willing to take risk. Bihar needs people like you, and I hope to learn a lot from you today. So I will hand over to Dr. Rana. Thank you. Thank you so much. Thank you. So we take this opportunity to extend a very warm welcome to all the eminent members from UNFPA, right from the national team as well as our state head, once again with a big round of applause. And may I please request Mr. Jaydeep Biswas to share his words of wisdom to our team. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Rana. How much time do I have? You know the hard time well. Okay. Let's do 15 minutes. Yeah, and we then should hear from them as well. So thank you. I'm very delighted to be here. It's a very exciting place as I was learning about it. Chandragupta Institute of Management. You are at par, aiming at par with the IIMs, so the standard is well set. And I see all of you here full of talent and innovation, I think. So I'm very pleased to be here. I don't want to give you a long lecture, but really let's have some interaction around the topic that I've been given, is to speak about SDGs, the Sustainable Development Goals, in a practical way. There are 17 of them. I also don't remember them at one go. So we could try a test whether collectively in the room we can answer all of the 17 together. That's one challenge we have. The second is I'm very keen to speak to you about
some of the social and public policy challenges that could be looked at by people like you through innovations and through disruptions, because startups are about disruptions, isn't it? Problems that are not getting solved for a long time. How do you solve such problems? I mean, one such problem this morning we are grappling with, Sanjay, my colleague, and Kirti, and we are looking at, for example, the incidence of child marriage in Bihar, which, by the way, is quite high, one of the highest in the country. About 41.2% of women get married before the age of 18. Now, that is 2 out of 5 girls. And the economic and social impact of such a phenomenon could be huge. But we do not have economic calculations of how much damage that causes to the state of Bihar. We, of course, know that if a girl gets married early, at 15, at 16, that means she doesn't complete her schooling if she is in school. That means she might become pregnant at 70, and complications may arise. She may have another child at 19. And by the time she is 20, she may be the mother of 2 children who will probably have health challenges, potentially later of early complications. They may have other kinds of difficulties, which is proven by research that if girls get married early and if they have children, they could be premature, they could be less vaccinated, and then they are into another cycle of deprivation. Now, the challenge I was talking to you about is this. Bihar in 2005-06, as per the National Health Survey, used to have about 70% of girls getting married under 18. Okay. Now, there was a great progress between 2005 and 2016 between NFHS, the National Family Health Survey, 3 and 4. By 2016, that dropped from 69% to about 42%. 44%. So there's a sharp drop of 25 percentage points of child marriage. So Bihar obviously did something right, and lots of good policies worked. But then from 2015-16 to 2019-20, 21, when the next National Family Health Survey came, it shows that Bihar hardly moved from 44% to 42%. So it's stuck. And then there are questions about certain districts of the state, especially in the eastern part, where the phenomenon of child marriage has gone up. So with my state head and our policy and research head, Sanjay and Kirtiji, we are really looking at what are the solutions? What are the next generation of solutions which will work? And we were speaking to senior officials, we are speaking to researchers. And seriously, this is a problem we don't have a good answer to. And it'll be interesting if there are economists within your group to see if you can calculate, what kind of GDP loss Bihar faces, or other kinds of costs. So that's one aspect. Could a startup run a campaign on this kind of phenomenon? And the official was asking us, wouldn't it be nice to run a massive campaign on reducing child marriage with some kind of an innovative way? I mean, I see young girls in this audience, and people like you could, provide ideas on what campaigns would work, what would make the parents and the grandparents to understand the value of delaying the marriage of young women till they have attained their bodily, growth, on their educational growth, and so on. So that's just an example, colleagues. I do want to have a little bit of a discussion with you, but there are several challenges like this that we are grappling with. Now, coming to SDGs, I mean, Sustainable Development Goals, there are quite a few to look at and understand. Of course, the first one is an utopic goal. Utopia would be to have no poverty. That's the first goal, right? And I'll not list through, but I'll give you a bit of a sense on how they are bunched. And then you have goal number 2, which is zero hunger.
So a lot of work needs to be done on goal 3, which is on health and nutrition and well-being. And this includes mental well-being as well. And goal number 4 is quality education. Goal number 5 is gender equality. Now, goal number 5 is where I want to focus a little bit more. And that is what is the mandate for United Nations Population Fund, UNFPA, is to look at a few issues under gender inequality. Is particularly, like I described, child marriage is a particular one. Sexual violence faced by girls is also huge. Globally, any guesses? How many women out of 3 face sexual violence? Perfect. 1 out of 3. India is similar. It's 29% face intimate partner violence. So that's measured by a national survey. Again, it is not moving very well. It is not making great progress, right? The other one is maternal mortality, which also is very important, where India is thankfully making great progress. Still, every day, about 70 women die somewhere while delivering in the country. Every day in the country in India, about 70 women die giving childbirth. And these look like statistic to us when you see 70 women die. Okay, but then we were looking at a database of about 1,627 women who have died giving birth to a child in Madhya Pradesh in 1 year. Okay. Now, then it becomes real. Then you start looking at names, who are the mothers, what had happened. 58% of them, I think, died giving, or 44% of them died giving birth to the first child. So that means that must have been the first experience of a woman giving birth to a child. And the family must not have prepared, or there must have been complications. There must have been delays in reaching the hospital. There must have been some delay in treatment. But they died. 44% of 1,627. And possibly a lot of them would have been preventable. Some, sure, they become so complicated and difficult. But women should not die giving childbirth. Not this number. Bihar is also high. Madhya Pradesh is the second highest. Assam is the highest. And so what we are looking at will be interesting for entrepreneurs like you, is when we are looking at this data and we have started looking at, we find 57% of the cause of death has been recorded as unknown By the medical fraternity. by the medical fraternity. Now, what does that tell us? Either they were not able to write what exactly they found, or they were not able to decide what the cause was, but it remains that 57% of the death while giving birth to a child has remained unknown. Now, we have to solve some of these problems. And, markets will not solve them easily. You are entrepreneurs, you are business leaders, you are innovators. We need more solutions in the public policy space. And these are not easily forthcoming. And these are generally with consultants, the big consultancy firms. But they're not necessarily good at this. So policymakers, who I'm sure you connect closely, are in search of these problems, solutions. These are the examples I can think of immediately, which makes a huge case for some more technology-driven solutions. There's one more I'll explain, which is currently my favorite. There's some evidence that the gender and the social norms which distinguish or differentiate how a girl is treated and how a boy is treated actually starts very sharply at the puberty, at 11 and 12 years of age. That's when parents start forcing girls to stay indoors, ask more questions where she's going, worries about her safety, her mobility, her bodily autonomy, her growth, whereas the boys are given more freedom at that age, starting from that age, how you should go out, express yourself, be more manly, and
greater freedoms. So there's a complete divergence that happens at that age. Now that leads to a complete socialization and institutionalization of the gender gap, which then manifests itself in many ways later. So question is, we don't have great solutions to these kinds of social norms. How do you change them? What kind of campaigns can you run, which will impact on the behaviors and thoughts of people? And globally, the best actually, some of the, you may have heard of thinking or nudge thinking, people like them we speak to, and they don't have great solutions. These are intractable, difficult problems. So these are some of the thoughts I thought I should share with you. And then I don't want to speak too long. Let's get some interaction going. Let's get some thoughts from you. I'm sure my colleagues will also join in. But basically to say, you are in that interesting space between public policy, private entrepreneurship, with new talent and technology. And I hear startups make a lot of money. I hope that's also coming down the way, but innovation is really in demand. That's the way I see it. And we can't have enough of innovators. So you're in the right place, you are in the right space. And I really wish you all the best, and I'd like to hear from you. Thank you very much. Yes, now the house is open for questions. Questions, comments, insights, ideas. अंग्रेजी, हिंदी और भी भाषा में भी, बांग्ला, ओडिया. Yes. Sir, maybe is very global festival and Indian culture. I think it has information. अलग particular model पे बहुत सारे areas हैं जिसपे government अभी बहुत सारे areas education sexual reproductive health इसके अलग-अलग areas हैं तो हमें लगता है कि कुछ ऐसे हमें हमारे पास सॉल्यूशंस आ सकते हैं मुझे लगता है हमने ऑलरेडी हमने अप्लाई भी किया था एमएसए भी अप्रूव भी हो गया अब वो अंडर प्रोसेस में है आपका नाम बताएंगे और आपका थोड़ा स्टार्टअप क्या है वो बताइए तो हम लोग को भी समझने में मैं अभी मेरा नाम हुआ सुनील के पास एक एजुकेशन स्टार्टअप के नाम से स्टार्ट किया कोविड का ही ऐसा प्लेटफॉर्म है घर से पढ़ाई मतलब घर से हम बच्चे को हर चीज दे रहे हैं हर तरह का चीज उनको कहीं जाने का जरूरत इसी मॉडल में हमने स्टडी किया हमें लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर है कि आपकी स्किल ट्रेनिंग होगा इससे मतलब हेल्थ का अभी क्या है 90% से 99% जो एकेडमिक पढ़ाए जाते हैं हेल्थ में कुछ नहीं पढ़ाया जाता तो सेक्सुअल हेल्थ की ट्रेनिंग उनको एकेडमिक ये बहुत बड़ा गया है ई लर्निंग भी है तो एक अच्छा मॉडल है ई लर्निंग का जो मेरा एप्लीकेशन है हम हेल्थ का एक अलग से कोर्स करके तैयार करवाएं और मैचिंग और वो भी एक पढ़ाई बेटी के बहुत सर्टिफिकेशन दी कि वो पीपल या फिर स्टूडेंट का स्टूडेंट के लिए उनके एज के अनुसार वो हेल्थ सर्टिफाइड है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एकेडमिक में वो एक्सपर्ट वो एक हम लोग उसको छुपा कर रखते हैं 17 साल का बच्चा है उसके लाइफ का कोर्स 5 साल का बच्चा वो भी हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पढ़े पहला क्लास का बच्चा वो भी सीखे क्योंकि ये गैप हम लोग छोड़ देते हैं वो एक बच्चे के अंदर कभी डेवलप हम लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं हर चीज पढ़ा रहे हैं लेकिन ये चीज नहीं पढ़ा पा रहे हैं कोई कॉलेज में नहीं पढ़ाई होता है यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई होता है कोई भी कॉलेज बताते कि बच्चे को पॉवर्टी जो बड़े बच्चे हैं उनको सेक्सुअल नॉलेज दिया जाना नहीं दिया जाता एक मैंडेट होना चाहिए और किसी एप्लीकेशन के थ्रू ई लर्निंग के मेरा होम फील्ड में हम हेल्थ का एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और कोई कोर्स तैयार कर रहे हैं पहला है हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट का सॉल्यूशन दूसरा था कि आपने वुमेन मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है बहुत बिग प्रॉब्लम उसके लिए हमने एक स्टार्टअप किया प्रोसेस में दैट इज कॉल्ड पैड को टेक करके अभी तक तो पैड्स और सेफ्टी पैड्स के लिए ही लोग करते थे लेकिन उसको मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए और मतलब उसमें प्रॉब्लम था कि इनिशिएटिव यूज करते तो जस्ट और ये बन रहा है
यानी उसका भी सोल्यूशन निकाला कि उसके प्लास्टिक को क्या कर रहे हैं, बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके जो धुआं होता है उसको हमें स्मोक को हम कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही एक चैलेंज था, हमने बहुत जगह चैलेंज मिला कि हम उसको चलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा और इन्वायरमेंट को, और उसका राख बर्बाद होगा। हमने राख को भी यूज कर रहे हैं तो कुछ चीज बनाने में। तो पैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ हाइजीनिक सिस्टम, ये हमने उसके लिए बना रखा है, जो कि ऑलरेडी है। उसके बाद है कि एडीएम गुरु के नाम से क्या हम लोग मुन्ना गुरु हमें स्किल दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि अब बच्चों को ये जो सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है ना, सबसे बड़ा रीजन क्या है, मुझे लगा, हमने देखा कि एजुकेशन ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो ये सब प्रॉब्लम खाई हो रहा है। बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, छोटे बच्चे से डिफरेंसेस बढ़ते जा रहा है, मेल चाइल्ड अलग हो जा रहे हैं, फीमेल चाइल्ड अलग हो जा रहे हैं, उनके बीच में गैप ऑटोमेटिकली गार्जियन बना दे रहा है, जिसके कारण तो अब क्या करना है कि मेल बच्चे को फीमेल की तरह रखना है, जो उनको रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं वुमेन की तरह कि अब रूम में रहो, बाहर मत जाओ, इंडोर रहो। बच्चे मेल को हमने करना शुरू कर दिया इस तरह का, ऑटोमेटिकली 50 से 70% खत्म हो जाएंगे। बच्चे को लड़की की तरह ट्रीट करें, हम अपने बच्चे को लड़की की तरह ट्रीट करें और लड़की को लड़की की तरह, उनको फ्रीडम दे दें। रिवर्स करना पड़ेगा पेरेंट का, एक मेंटेलिटी को कोई चैलेंज देना होगा कि आप अपने बच्चे को लड़की बनाओ और अपने लड़के को लड़की की तरफ ट्रीट करो और लड़की को लड़के बनाओ, ड्रेस में, रहन सहन, सब कुछ में, बोल्डनेस में, सब चीज ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमने हेल्थी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो कंप्लीट share his or her thoughts. आपका अनुभव कैसा रहा बिहार में, जो आपके मुद्दे हैं, आपका मुद्दा क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग सही है, आपका प्रीवियस चीज जो आपने अपने तरफ से ट्राई की हो, तो हम लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। ये समस्याएं हैं आपका, उस पर मतलब एक कंसर्न है, आपका अभी तक कैसा अप्रोच रहा और किस तरह का अप्रोच आप तो आप ऐड करिएगा बिहार के पर्सपेक्टिव में। एक्चुअली प्रोग्रेस तो बहुत शार्प है, जैसे मैं बता भी रहा था ना, जो फिगर मैं बता रहा था कि इवन चाइल्ड मैरिज में व्हेन यू सी अ शार्प ड्रॉप, तो देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस। एक समय तक प्रोग्रेस आके फिर प्लेटो हो जाता है, जो कि हमेशा एक कोई भी प्रोग्रेस में आपको मिलेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल में आपको इंटरवेंशन चेंज करने पड़े, बिकॉज दे नाउ रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट। सो अगर हम देखें हमारे इन जनरल, अगर बिहार को प्लेस करें तो बिहार अभी भी ऑब्वियसली इन द बॉटम मोस्ट स्टेट्स में है, बट किसी स्टेट को किसी स्टेट से कंपेयर करना ठीक नहीं है, बिकॉज सबके अलग हिस्ट्री है, सबके अलग फैक्टर्स साइकोलॉजिस्ट। हाँ, तो मेरा एक फेवरेट ये है आजकल कि इंडिया इज ऑन द पाथ टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हम कहते हैं, बहुत यूथ है, और बिहार यूपी आई थिंक लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यूथ है इंडिया में जो स्टेट्स के हैं। बिहार के 40% है, और बिहार के 40% ऑफ यूथ पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है दैट इज ह्यूज। बट उसके लिए हमें एजुकेशन, जो आप कह रहे हैं, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसमें प्रोग्रेस हुआ है, बट बिहार के चैलेंजेस भी बिहार के सामने है। अर्बनाइजेशन बिहार की बहुत कम है, अभी भी बहुत वीक है, आई थिंक 10%। और बिहार की जो विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी है वो भी बहुत कम है, आई थिंक 10-11%। सो ये फैक्टर्स, बिहार ने काफी प्रोग्रेस करके एक लेवल तक आए हैं। अब फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या चेंज करेगी, दैट इज माय व्यू। बट So you're seeking for those answers, or you have tried some things to take with this? We have tried a lot of things, and some of these things are also bearing results. एक दो चीज जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगी, खास करके अडोलेसेंट और यूथ के कॉन्टेक्स्ट में। हमने लाइफ स्किल्स देखा कि अडोलेसेंस के लाइफ
स्किल्स अगर बेहतर होते हैं तो वो अपने लाइफ के सही डिसीजंस ले पाते हैं, बहुत जल्दी वो चेंज को अडेप्ट करते हैं, उनके एस्पिरेशंस बनते हैं, और जब एस्पिरेशंस बनते हैं तभी वो एफर्ट करते हैं ब्रेकआउट करने की और कुछ नया करने, बदलने, समाज को बदलने की, ये चीजें होती हैं। तो लाइफ स्किल्स एजुकेशन यूएनएफपीए काफी स्टेट्स में कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए, खास करके जैसा अभी हमारे साथी के पहले साथी बोल रहे थे, स्कूलों के साथ साथ मदरसों के लिए हमने बिहार में किया है, और अभी बिहार में 34 जिले में गवर्नमेंट अफिलिएटेड मदरसे 1942 हैं, जहाँ हम लोग लाइफ स्किल्स एजुकेशन करिकुलम को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये पिछले 3 साल में थोड़ा बहुत बदलाव हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इसका हम कोई डेटा अभी आपको नहीं दे सकते क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम फील्ड विजिट करते हैं, जो हमारी टीम बताती है, डेफिनेटली जैसा जय कह रहे थे, लड़कियों का मदरसा में जाना बढ़ गया है। मदरसा में एनरोलमेंट था, अटेंडेंस कम होता है, एनरोलमेंट तो हो जाता है, स्कूलों में भी अटेंडेंस कम होता है, तो उनका एवरीडे स्कूल जाना, अटेंडेंस का बढ़ना, क्लासेस करना, क्लासेस में इंटरेस्ट लेना, और जो एक सपने देखने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत बड़ी, प्रोजेक्ट वर्क करना चाह रही हैं, इंग्लिश सीखना चाह रही हैं, कंप्यूटर सीखना चाह रही हैं कि अपने पाँव पे खड़ी हों, डॉक्टर बने, आईपीएस बने, ऐसी कई चीजें वो कहने लगी हैं जो मदरसा एनवायरनमेंट में आपको लग रहा होगा कि नई आवाज है। तो ये ऐसा नहीं है कि समुदाय को पसंद नहीं है, सब लोग उसको बहुत सराह रहे हैं। तो ये मैं जस्ट कम्युनिटी वॉइस के तौर पे आपको कह सकती हूँ। जैसे जिक्र किया, चाइल्ड मैरिज बिहार में काफी 40% हुआ, तो इसको रिड्यूस करने के लिए यूएनएफपी की तरफ से क्या कोशिश हो रही होगा? जिनको चाइल्ड मैरिज का सामना करना पड़ा, बच्ची है 12-13 साल की, बाप अच्छा रिश्ता मिल गया, वो हम लोग कई दफा गांव में रहते हैं, तो अभी बच्ची है, पढ़ने दीजिए, हाई स्कूल कम से कम कर ले भाई, लेकिन वो हमारी बात सुनने के बजाय तुम लोग अपनी बेटियों को कर लेना, हमें तो अभी शादी कर। तो इस तरह की प्रवृत्ति को कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं, कैसे वो? Fine, I think this is the question he said is asking from all of you as startups, how we can join hands together. Exactly. Actually, this is a matter of behavior intelligence. We are trying to understand the behavior of the citizens and how we as startups can have some contributive, not in not-for-profit mode, even if it is in for-profit mode, how can we sensitize with some innovative technology, innovative communication channel, an animation, a film, an advertisement, a graphic design, a print, a booklet, a movie. So this is, he has given to you to think upon, and that's how this meeting is all about. UNFPA is doing wonders across the world, also in the country, also in the state. This meeting is to help you understand there is an opportunity to bring a change in behavior of the people, the way they think. So as startup, especially those who are in the domain of marketing communications, digital marketing, product development, those who are in ed tech, they can, make sure they develop some curriculum which can change their thought process, bring a change in their philosophy, guiding principles, developing content, developing advertisement, developing some multimedia content, some movie, some. So here is what he's talking about. The house is open for you to think about what you can do as startup and join hands together with UNFPA. Whenever I invite some person, I wish to bring along with no lectures, hardcore business. So here is a business opportunity for you, how you can think that, yes, there are certain challenges. Early marriage is one, suboptimal level of education is another one. Third is their health, their nutrition. 1, 2, 3, 4, 5 SDG ka aap dekh lenge. One is no more poverty. 2 is no more hunger. So when we are talking about this, fourth is quality education. So health, well-being, nutrition. So how we can come out with, one is improving their mindset, changing their knowledge level, changing their intellectual level, knowledge, skills, and
competencies. So here is an opportunity for you to think if you can develop some product idea, some business idea, join hands together and do. They are spending millions and millions of US dollars across different countries and states. So this is food for thought for you. Madam Kirti, she's leading the state of Bihar here. Her office is at UNICEF in Patliputra colony. So it's a food for thought for all of you as startups. If you can think of some innovative product, idea, communication platform, channel, digital marketing network, whatever way you think. So you can structure it and think as a startup, make it a business model, share it with UNFPA. They will be more than glad to see how you can contribute. I think I have been able to drive home the message. Very much. And very much. technology So- will be the game changer. Yes. So how we can have some new generation technologies, some AI enabled, sensor enabled technologies, AI, ML, Hadoop, any new technology, if that can help in transforming the society at the grassroots level, which can motivate them to learn more, earn more, have a better life, have better menstrual health with the female community, and so many other challenges are there. So there are certain challenges. So SDG, how it can become a business opportunity for you, how your next business idea will be there to make sure you are eradicating one of the challenges mentioned in SDG, particularly in general pertaining to the country, being specific, being to Bihar. So the open invitation to all of you on behalf of UNFPA is to think of some innovative products, ideas, communication platforms, channels to sensitize the citizens at large and women and children in general, in specific, so that we can bring about a change, a revolution. And it's all about communications, integrated mass communications. Any innovative, one movie can make a difference. One movie can make a difference. Everyone can start. It can change the mindset of millions of people. Open opportunity to all of you. I hope I'm clear to drive home the message. Yes. So this is an open invitation to you. You can start looking at the SDG challenges and how they are related to women and children. And if you can come up with an innovative idea, probably you get some funding in form of startups, some support and cooperation from UNFPA as well, right? And Dr. Rana, is it possible to like have a brainstorming session on SDGs in your group amongst themselves? Yeah, they can do it. We'll request Rajiv ji. You can. I think So, young yes. woman Yes, here, please. she wants to. मैम मैं अभी करंटली एम्स में सीनियर रिसर्च कर रही हूँ, उस पे काम चल रहा है कि जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि प्रेगनेंसी के टाइम हेल्थ वर्कर जो होते हैं उन्हें डाइट देते हैं, पर हमने देखा है कि 99% लड़की मतलब आफ्टर 5 क्लास कि वो प्रेगनेंसी के लिए वो रेडी होती है। दैट मीन्स प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी डेवलप होने लगता है, तो उस टाइम से वो प्रेगनेंसी के लिए एक लड़की कंप्लीट रूप से होना तैयार होती है। तो वहाँ पे बहुत सारी डाइट के प्रॉब्लम के कारण वो लोग बोलते हैं क्या ये एडल्ट हो गई या फिर, पर वो मतलब एज मदर बनने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी उस लेवल पे हार्मोन चेंज होता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आफ्टर 5 या 6 क्लास के बाद उन्हें प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, जिससे उनका प्रोटीन लेवल अच्छा हो, जिससे उसका हार्मोन लेवल सही हो, क्योंकि जनरली डेट देखा गया है अभी जो हम प्रेगनेंसी में होता है तो बीपी या हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बीपी, क्योंकि उनका हार्मोन लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता है। और हार्मोन लेवल डाउन होने का कारण उनका मेन रीजन होता है कि उनका न्यूट्रिशन सही नहीं होता है। तो एआई के थ्रू हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब पार्टिकुलर हर लोकेशन में ऐसा केस नहीं मिलता है, कुछ कुछ एरिया है बिहार के जहाँ पे ये मिलता है। तो हम ऐसा डेटा के थ्रू काम कर सकते हैं कि जैसे उस एरिया में हम उस ढंग का डाइट प्रोवाइड करवाए, जैसे बहुत सारी ये हेल्थ वर्कर आशा वर्कर देती है। तो कॉलेज में या कॉलेज में स्कूल की लड़कियां जो कि 10th तक के जो स्कूल हैं तो उन्हें उस ढंग का डाइट प्रोवाइड करवाया जाए। इससे होगा कि हम सरकार तो हर क्षेत्र में दे रही है, पर जिस क्षेत्र को जरूरत नहीं है वहां पे उनके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, पर जहाँ देना चाहिए उसमें वो ज्यादा लगा के दे ताकि वो एक डेवलप हो सके, लड़की मेच्योर हो सके कि वो प्रेगनेंसी के लिए केपेबल हो सके, जिससे हमारा मॉर्टेलिटी रेट ऑब्वियसली डाउन होगा। क्योंकि मेन रीजन हमने अभी तक देखा कि यही होता है कि वो डेवलप होती ही नहीं है, मतलब एज फिजिकली वो डेवलप होती है पर जो होना चाहिए एक मदर बनने के लिए उनको वो नहीं हो पाती है।
मैं डेफिनेटली आपसे वो आप जो डेटा बोल रहे हैं Yes. कि ऐसे कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप मैल न्यूट्रिशन लड़कियों में ज्यादा देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे उनको सप्लीमेंट्री इस तरह के डाइट की जरूरत है। अगर इस तरह का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो मैं तो यहीं रहती हूँ, मैं जरूर आपसे इस पे बात करना चाहूंगी। 2015 में नीति आयोग में थे, ऑफिस में जाके मैंने अटल टिंकरिंग लैब मेकर स्पेस बहुत सारे खोले, तो 75 मेकर स्पेस में। उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर पे काम किया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्रैकिंग ट्रेसेबिलिटी। तो मुझे पता चला काम तो बहुत है लेकिन ट्रेसेबिलिटी इज अ फैक्ट। उसके बाद मेरा थर्ड जो एक्सपीरियंस था, और मैंने मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क के अंदर स्केटबोर्ड पार्क बनाया। स्पोर्ट्स तो मेरा फर्स्ट पैरामीटर होगी। स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको करेज, कॉन्फिडेंस, टीम से ना कोऑर्डिनेशन चाहिए। कीप स्पोर्ट्स एज अ फर्स्ट पैरामीटर। स्पोर्ट्स के बीच में हमने बैम्बू हाउस बनाया था और ट्री हाउस बनाया, वो भी एक्टिव है और वो सारा एयरबीएनबी पे लिस्टेड है, जो लोग नाइट स्टे करते हैं। नीचे ओशन ऑफ फायर, ऊपर मिल्की वे, और वहाँ पे 10 Mbps इंटरनेट है, फ्लश टॉयलेट भी लोगों ने अपने हाथ से। And then third is entrepreneurship culture. ये मेरा past experience है। अभी बिहार में आके जो मैं कर रहा हूँ, मैंने 2 कट्टे का बिजनेस मॉडल बनाया। मेरा कोर एक्सपर्टीज इज लो टेम्परेचर ड्राइंग। कोविड में मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाए। अभी इनके फूड वेजिटेबल्स में ड्राई कर रहे हैं और ये भी 3 साल तक खराब नहीं होते विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मैं कर रहा हूँ, चीजें हो रही है। सो जो आपने ये सोशल बिहेवियर चेंज की जो बात कर रहे हैं, इट्स लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट, स्पेशली बिहार के इकोसिस्टम। और जो भी अभी के लोगों का माइंडसेट है, सर अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, कैंपस में मेकर स्पेस बना रहे हैं। तो स्पोर्ट्स या फन एक्टिविटी को आप फ्रंट में रखें, मेकर माइंडसेट को बीच में रखें। मेकर माइंडसेट में जैसे हम लोग भी जाते हैं, कोई भी जाते हैं, जैसे स्मॉल 2 BHK का स्पेस है, प्रोटोटाइपिंग करना है, कुछ भी करना है, इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस। देन थर्ड में वो सोचना शुरू करते हैं, अब नाउ आई वांट टू स्केल इट अप। पर ये चैनल रहना अपने आप में अच्छा है, और अपने पास जितना इकोसिस्टम है, दिस इज मोर देन इनफ। ऑलरेडी हम लोगों ने भी 3 लाख इंटीरियर में ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल का डेटा हम लोगों ने भी निकाला। आप लोग अगर डायरेक्शन करो और बोल दो कि भाई अपने को ना ये पैरामीटर्स का वीकली रिपोर्ट चाहिए, सो वी कैन पुश दोस डेटा विद एग्जैक्ट मतलब फिगर्स। जैसे मेरा भी कई एक्सपीरियंस रहा कि उनको टॉयलेट बनवाना रहता है, लेकिन मिचौलियों को दिया, मिचौलियों ने कुछ कागज पत्थर पे कर दिया, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं। इसका ब्रेक करने का आई थिंक मेकर कल्चर को अगर माइंडसेट बीच में रखो, आगे फन एक्टिविटी रखो, स्पोर्ट्स रख दिया, नाटक रख दिया, कुछ भी रख दिया जिसमें टीम वर्क हो और लोग क्या कहेंगे वाला जो माइंडसेट है ना, वो चेंज हो जाए। हाँ, फिर मेकर स्पेस, फिर थर्ड में अच्छा मेकर स्पेस में हम लोग का रोल आएगा कि जैसे ये अच्छा काम कर रहे हैं, दिया है, चंदन जी है और अपना कृपा वाले हैं, ये these guys are doing amazing work. Like हम लोग अपना अपना नाम जो शूज बनाती हैं, so maker space will give an exposure to domain experts क्या कर रहे हैं, that is a fun activity. थर्ड में जब मैं आगे बोलता हूँ, अच्छा भैया आपको मेडिसिन अच्छा लगा, आपको हेल्थ अच्छा लगा, तो मेडिसिन और हेल्थ का कुछ कॉम्बो निकलेगा, मे बी निकलेगा, मतलब 2-3 डोमेन का अपना वर्टिकल निकलता है, रस्सी बनाना, ये बनाना, उसको फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे ले आए। चलो भैया इसको स्केल करके देखो। तो हमने आर्टिसंस वगैरह के साथ किया, दंतेवाड़ा में ये लोग मेटल वर्क करते हैं, वो सबके साथ किया, ये कल्चर तो वहां पे काम किया था। और लेजर फोकस ऑन बिहार, जो मेरा बिजनेस मॉडल 2-2 कट्टे का, जमीन टूटी हुई है, समझदार आदमी गांव छोड़ देता है, ये प्रैक्टिकल इश्यूज जो आप चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिहेवियर चेंज जो बंदा कर सकता है गांव छोड़ दे, उसको पहला मौका मिला बिहार में, वो छोड़ दे। तो बिहार में मैं चाहता हूँ इट्स अ वैक्यूम, लेडीज है, बूढ़ा आदमी, रिटायरमेंट के बाद बोलो। तो अभी जो मेरा करंट अप्रोच है, मैं मतलब 6000 कॉल करता हूँ, 2 बंदे ढूंढके में। तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो मेरा पूरा ग्रिप में है, कटिहार का एरिया मेरा ग्रिप में, ठीक है, लखीसराय, बेगूसराय मेरा ग्रिप में। मैं बंदों पे खेल रहा हूँ, वहां जाके मैं FPO बनवा रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ FPO आप लोग फ्रंट में रहो, जोश में आके हम लोग एक बार एक्टिविटी करा दिया, लोग मजे में आ जाएंगे। वी नीड अ मैकेनिज्म जहाँ पे उनको सेंस ऑफ कंटिन्यूटी फील, जैसे सर ने बीहा बना दिया, तो हमें पता है बीहा में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हमारे पास सबकॉन्शियस Please correct yourself. It has been established by government of Bihar Department of Industry. We are just managing it.
करने वाला Okay, fine enough. Before you, I'll come to you. We'll just take it forward. There is one couple of startups like there is one Crida. They are into e-learning domain. So probably they can do courses on online mode. So they can be one contributor. We have just left. We have another startup called Columbus.com. So they are into structuring written documentation in Hindi, English, Mathli, and Bhojpuri with graphics and all. So that can go a long way. So he has been doing a lot of work with the government. So structuring Hindi or English or Mathli, Bhojpuri, the regional language. So that's another one. There are some other, yes, please, I'm coming to it. So this is two which I could get off the memory. Then we have some people who can actually help in creating people with entrepreneurial mindset. So if they're able to make good money, they'll be able to bring up their children in a better way. So it's like gender sensitization as well as employability sensitization, intellectual level. So that's all from my side. I think you can go and then follow. Anybody first? I'm not that this, but I know someone. They are into this. My sister, she is passionate about menstrual hygiene, and she tried her best to get into this, but because of her busy schedule, not much. But she has developed a product, sanitary napkin. She's like totally organic, which will not create any kind of environmental hazards. I mean, even if you throw anywhere, like we know Any website she has? Can you tell the website? No. as I told you that she's already having her own venture in all kind of stuff. So, but I think there is a venture here. Kya naam hai us venture ka? This she makes pads from banana fiber. Yeah, she's there, right in France. Sam. Okay, I don't remember her name. Oh no, she's not. Richa Vatsan, she prepares sanitary pads from banana fibers. So it's like earlier that used to be thrown away. She has converted. So it's a very sustainable product. So we can. Yeah. Fine enough. it's still that she's not into the ecosystem of. Perfect. Why don't you invite her? I mean, we can use her expertise. Perfect. Perfect. देखिए समस्या है, समस्या का समाधान भी है। सर जैसे करने वाले लोग चाहिए यहाँ गाँव में, जिनका मतलब देखो कि भाई बिहार में करना है, टिक के करना है, और ये मतलब मैं बोलना तो नहीं चाहता, हम जैसे बंदे कर पाएंगे, जिनके पास और भी ऑप्शन है, but they are sure shot कि यही कर। She wanted to ask, let's hear. Yes, from please. others. हेलो सर, myself रश्मि. So basically मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, नॉट फॉर वीमेन. आई नो अभी इक्वालिटी की बात हो रही थी एंड विमेन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. आई अंडरस्टैंड उसकी परसेंटेज भी काफी है एंड वुमेन हैरेसमेंट भी बहुत हो रहा है. बट सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेल हैरेसमेंट की बात हो? बिकॉज अभी लिटरली मैंने 1 वीक पहले ये देखा है, वो बंदा रो रहा था एंड उसपे झूठा इल्जाम लगाया. तो मुझे बस ये जानना है कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस पे वर्क करती है जहाँ पे मेल खुल के बोल सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है वो नहीं बोलते हैं और इक्वालिटी यहाँ पे नहीं होती है. क्योंकि इक्वालिटी की जहाँ बात आती है फीमेल अगर दिक्कत है. Because we have gone to a stage where now we are talking about male rights. It means we are moving in the right direction. सर क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेल प्रोटेक्शन की भी बात हो, मेल हैरेसमेंट की बात हो? बिकॉज मेल भी हैरेस हो रहे हैं एंड क्या वो कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे ये नंबर डिफाइंड है? I think we'll have to wait till UN has a body especially dedicated to men. Till now, Indian government has not worked on any national commission for men. There is for women, there is NCPCR for child rights as well, child protection. So fine enough. We'll wish and pray for a better tomorrow. Till something comes up. Yes. Yes, I know. I just wanted to add on a practical note, not particularly for male harassment, but we are launching chatbots, which is IT enabled, and it's called Khul Ke Pucho in Madhya Pradesh. और उसमें young adolescents, young people,
can ask and get answers to various sorts of questions. उसमें ये भी है कि अगर bullying हो रहे हैं आप या relationship में कुछ problem है तो irrespective of male female it has become very successful actually. एक month पहले launch हुआ है, so there's a helpline in which you can get questions and answers. तो I don't know, बिहार में भी हम लोग कुछ इस तरह का सोच सकते हैं, but that seems to be having a lot of demand for young people. Yes, please. Suppose like you quoted one thing like that, the maternal death, 57% of the reasons for the death is not reported. This is others. Yeah. So it means it means at every stage like ASA, ALM, doctors, they have missed the danger sign, assessing the danger sign. So that is what that would be the, so somehow we'll have to fix this. If you want to fix this, for the reason for the death, should not be others, there should be a particular reason for that. We will have to like at what level there is a lack of knowledge or they are not able to identify the danger sign in the book. Somehow that is what we need to fix that. Maybe because somehow at some most of the problem are some not very widespread. You have to identify those pockets with if most of the mental deaths are occurring, then say do a kind of research and accordingly you can fix, or maybe like startup like we can use a lot of like e-learning course where they can be trained in identify the danger sign. There are a lot of universal is also developed like 3D where they can understand what are the danger signs are there, because in the public health systems there is not a regular system of capacity building. So for every level there is a capacity building. Do you want to respond to, because you're doing Yeah, And that's important. artificial intelligence is also something that Yeah, please. So it's a very important thing, and we were also, because we are doing a study in MP, because the department wanted, how do we prevent or how do we avoid the mental health illness? And what we have seen in the field is, as rightly you said, that nobody looks into the danger signs and something. They say a normal pregnancy, theek hai, yahan chale jao, wahan chale jao, kind of thing. But here is that when we talk to the doctor, we have gone to the medical hospital, medical college. Every second day, one woman is dying there. We have gone there and saw the record and all, very painful. But at the field level, what you are saying, how innovatively we build the capacity of the grassroots worker, so she can bring that, okay, this is the kind of a sign which might lead to complication and she might die. So look, around more than 90% of deliveries are happening in the hospital. It is not the case, but still women are dying. But probably, and the doctor says, oh, she was brought with a hemorrhage. What can I do? I mean, there is no question in that. But at the field level, my only submission as a starter, if you can think innovatively, how do you change the mindset of the grassroots health worker like us? of quality assessment team of the state of Bihar. So when I used to go to different hospitals in Bihar, so you will not believe I have seen 50% of deliveries happening. They're just coming, and if the delivery is happening in the ward only. So somehow where they could not attest what is going to be the time of the delivery. So they could come back, because if it is happening in the ward, you can understand. Or even the vehicle also. Many times we listen, we hear news, or we did like while coming, the delivery happened in the vehicle. Like these are all reasons we can, how we can avoid that. That we understand that this is time to go to the hospital. They go to the hospital, they are there and they get a problem. But the root cause is if the worker can identify at the right time, Right. that takes care. But how do we actually reach out to all the workers? Your innovations might work. I think the dangers are insufficient and this delays. Yeah. These are the two areas which can. Delays models are there. Government says we will work on these things, second and third delay, while transit at the hospital. But वो घर से तो निकले और पता चले कि ये case could be a fatal case.
ये चीज कैसे पता चले, इज ए चैलेंज? हम बोलते हैं जैसे कि बोलते हैं कि हम हर एक डिलीवरी को एक हाई हाई रिस्क ही मान के चलते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। Fine, I think we have to come to a close. She has an urgent next meeting. So we can still keep in touch, invite her for an exclusive session. Yes, sure. Fine. Subject. Yes, please. Thank you very much, sir. It was a wonderful session and many things. We are very delighted having you here. I would now like to request Rana sir to present a small token of appreciation memento to JSF first. This is by one of our startups. Oh. I'd now like to request Rana sir to present memento to Sanjay sir. One of our startups. Now I would like to request Rana sir to present a memento to Kirti ma'am. She had been very instrumental in bringing and organizing everything. Thank you very much, ma'am. Thank you. Thanks, sir. So we wish to have this session again, sir. And then, Sure. Anytime. At mutual convenience. Thank you so much. Thank you. Thank you all of you for your time. Is already. आपकी हर तमन्ना पूरी every wishes of yours beyond. Sir, excuse me, sir. Thank Your lovely you. autographs, please. Very happy to. It's such an interesting. You have to have more female entrepreneurs. You are reflecting the same. Oh, yes. We are working towards it. Yeah. We'll make idea. Seed funding में बाकियों को 25 करना है, इनको 5 लाख extra. कुछ करिए incentive. No, it's a good idea. Your question has given some food for thought. The regular seed fund should be 25, for women it should be 5 lakhs extra. यहाँ की बहुत 200 के बराबर है. सुन लिया आपने?